Uh, okay, today we are going to discuss the pathophysiology of ulcer because we have discussed the normal physiological uh, functioning of stomach and how acid is going to produce, what are the factors responsible for enhanced secretion of HCl, and what are the factors those are going to protect the excessive secretions of the HCl, or they are going to counter the HCl secretions. Okay, now we will discuss the pathophysiology, or the factors those are going to be the pure cause of ulcer. Pathophysiology of peptic peptic ulcer disease. Okay, right. First, we will define what is ulcer. Okay, what is ulcer? Peptic ulcer. Peptic ulcer is a break or damage. Is a break or damage. Damage in the lining of in the lining of stomach or duodenum. Duodenum. Okay. Uh, Now we can say that there are two type of ulcer: stomach ulcer or duodenal ulcer, or we can say that uh, gastric ulcer or duodenal ulcer. Okay. So this is the definition of ulcer, right? The next is which type of layers, or which layers of gastrointestinal tract are going to be damaged by the hypersecretion of HCl. ठीक है, ulcer कब होता है? When there is occurrence of ulcer, when there is hypersecretion of HCl, because you know HCl is an acid. When there will be acid, it will go and damage the cell. Okay, यहाँ पे भी ये होगा, ये सेल को डैमेज करेगा, कोई भी एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो HCl है, जो कि या तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, या तो इसमें जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थे हमारे, दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, अगर वो काम हो जाएंगे तो ये डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो जो डैमेज है वो क्या किस किस चीज़ को ये कौन कौन सी लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो इन फिजियोलॉजी आई taught you people different layers of gastrointestinal tract, that I am just going to write those layers. The first one is mucosa. Mucosa, right? This layers can be damaged by the hypersecretion of HCl. The other one is muscularis. Muscularis. The other one is submucosa. Submucosa. Other layers that you people know, serosa and other type of layers can also be damaged, but these three layers are more prone to the hypersecretion of the HCl damage. Okay. ओके, अच्छा, अब जब ये हमें अल्सर होता है तो उसकी कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं? ठीक है, सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन कौन सी उसकी? दिस इज एसोसिएटेड विद पेन, पेन, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन means destruction, or the destruction of
gastric or duodenal cells. Perforation, perforation, perforation. Do people know what is perforation? Perforation mean uh, holes, holes in the GIT wall. So these are the symptoms of the peptic ulcer. Okay, now I am going to discuss the factors, okay, of ulcer. So for example, there might be one cell of stomach, right? Okay, factors of factors of peptic ulcer. Or you people can say that risk factors. Risk factors. Okay, there are different factors. Those are associated with the ulcer, like H. pylori induced ulcer. Today I will discuss H. pylori induced ulcer. What is H. pylori? What is the role of H. pylori in the occurrence of ulcer? Okay, then I will discuss NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs induce ulcer. Okay, and then there are different other factors those are associated with the ulcer. These are two main factors, right? Today we will discuss H. pylori induced ulcer. H. pylori means Helicobacter H. pylori. Helicobacter, Helicobacter pylori. Okay, right. Okay, ये हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी है क्या चीज? हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी, सॉरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और एच पाइलोरी, सॉरी, एच पाइलोरी, एच पाइलोरी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में. Okay, what is this basically? This is gram negative, gram negative, gram negative spiral shaped bacteria, spiral shaped bacteria. Okay, right. And it is one of the most uh, uh, we can say important cause of ulcer. Okay, most important in ulcer, right? Okay, as you people know that कि अब सब लोगों को पता है कि जो हमारा स्टमक होता है उसका इन्वायरमेंट किस किस्म का होता है. उसका इन्वायरमेंट किस किस्म का होता है? एसिडिक और बेसिक. यू पीपल हैव टू टेल मी एसिडिक और बेसिक. Aesthetic, sir. एसिडिक, एग्जैक्टली, एसिडिक इन्वायरमेंट, राइट. तो जो एच पाइलोरी है ना, ये इसके अंदर एबिलिटी होती है, इस एच पाइलोरी के अंदर, कि ये एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकता है. किस तरह इसके अंदर एबिलिटी होती है? यू पीपल कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, सर, why only H. pylori is associated with the ulcer, why not other bacteria? So I will definitely answer this question. Okay, कि H. pylori ही क्यों है जो कि इसमें इन्वॉल्व है? Okay, let's suppose for example, हम्म,
This is your H. pylori. This is H. pylori bacteria. Normally, it enters into the gastrointestinal tract through uh, oral route. Okay, oral route के जरिए ये enter होता है किधर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर. दिस इज H. pylori, right? Okay, and let's suppose this bacteria now has reached into your stomach, correct? And we people know that the environment of stomach is acidic, means that there is excess of hydrogen ions, right? I suppose this is the area where is the pH is very low, means uh, there is an excess of hydrogen ions, right? And now this H. pylori has reached into the stomach stomach area, right? Okay, there is an important property, and listen and remember, it's very important. Listen and remember, this H. pylori is very unique in its one character, that it has ability to release an enzyme. Listen and remember, release an enzyme, and the name of enzyme is uh, urease enzyme. Urease, urease. Okay, right? This is an enzyme which is basically secreted by Helicobacter H. pylori, right? And what is the function of this urease? ये जो यूरियाज होता है ना, ये क्या करता है, ये आपकी जो यूरिया होती है, यूरिया, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया के अंदर. किसके अंदर, अमोनिया, NH3, अमोनिया, NH3, ठीक है. एंड यू पीपल नो दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ अमोनिया. व्हाट इज द नेचर ऑफ अमोनिया? अमोनिया की नेचर क्या होती है, एसिडिक और बेसिक? एसिडिक और बेसिक, Basic. यस एग्जैक्टली. अब क्या करेगी ये अमोनिया, क्या करती है, व्हाट दिस अमोनिया इज बेसिकली गोइंग टू डू. अब क्या होगा, ये अमोनिया रिएक्ट करेगी किसके साथ, इन हाइड्रोजन आयंस के साथ. क्या करेगी, it will react with these hydrogen ions. Definitely there will be the formation of which ion, which ion, क्या बनता Ammonium है, ion. yes, NH4 positive, NH4 पॉजिटिव. अब क्या होता है, अब ये देखो, ये इन्वायरमेंट जो है ना, ये इसको बेसिक बना रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है. फिर उसके साथ क्या होता है, ये जो अमोनिया होता है, अमोनियम आयन, ये अमोनिया ऊपर वाला है, ये अमोनिया है, और नीचे वाला क्या है, अमोनियम आयन है, ठीक है. ये क्या करता है ना, दिस अमोनियम आयन देन गेट्स अटैच्ड विद हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है. Listen and remember, always in physiology and in pharmacology, there is no absoluteness. कोई भी तकमील नहीं होती फार्माकोलॉजी के अंदर और फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है. एंड यू पीपल नो थिंक दैट सर फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोक्सिल इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है, बिकॉज वी आर इन द स्टमक एंड हेयर इज द एक्सेस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस. तो हमेशा इस तरह नहीं होता कि जिस जगह पे हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे वहाँ पे हाइड्रोक्सिल नहीं होंगे. नो डाउट कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की बादशाहत है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है. जब भी हम फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी में कोई चीज़ रिलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि देर इज सम प्रेजेंस ऑफ द अदर थिंग्स, ठीक है, दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे 90%, लिसन, यहाँ पे 90% हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है, और बाकी कुछ हमारे पास 10% हाइड्रोक्सिल आयंस भी हो सकते हैं. तो इस तरह एज वी से दैट द pH of stomach is acidic, while when we discuss the pH of the intestine is relatively basic, means कि वहाँ पे बेसिक कंटेंट ज़्यादा है, एसिडिक कम है. तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे दूसरा जो अपोजिट इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल है ही नहीं. तो ऐसा नहीं होता, ठीक है. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यूरियस जो कि प्रोड्यूस हुआ H. pylori से, उसने क्या किया, उसने यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट किया. अमोनिया हाइड्रोजन आयंस की वजह से क्या, अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हुई. दिस अमोनियम आयंस इज नाउ रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एंड फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है. अब ये क्या होता है, बिकॉज द आयन इज वेरी अनस्टेबल, डेफिनेटली इट will try to make it stable, so it will react with its opposite ion and make a basic environment, and make basic environment. अब ये क्या होता है, अब ये जो बेसिक इन्वायरमेंट बना है, ये अमोनियम आयंस की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब क्या करेगा, ये
ये जो हमारा एच पाइलोरी है ये उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इर्द गिर्द इसको। ठीक है, अभी मैंने कहा था दिस H. pylori has ability to survive in the acidic environment. Why? This is the reason, because it has ability to make its surrounding environment basic and it can retain its integrity while there. Right? अभी यहाँ पे survive करेगा. Right? मैंने ये कहा है कि बिकॉज नाउ द इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट बेसिक। ठीक है, नॉट होल द इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी बेसिक। जिस जगह पे एच पाइलोरी होगा, जिस एरिया के अंदर, मतलब के पैचेस में, तो वो उस एरिया के अंदर ये जो है ना यूरिएज को रिलीज करेगा। यूरिएज देन विल कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया, अमोनिया विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस, द अमोनियम आयंस विल be going to make ammonium hydroxide. Now this ammonium hydroxide is a base and it will try to wrap up, this H. pylori, and now H. pylori will survive in very hot and burning environment of stomach. ठीक है जी, अब ये इसको क्या करेगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्या आ गया, बेसिक एनवायरनमेंट बन गया, तो ये अब एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। राइट, अब ये डिफरेंट अपने केमिकल्स को रिलीज करता रहेगा, जिससे क्या होगा, हमारा स्टमक जो है ना वो डैमेज होगा। अब वो किस तरह डैमेज होगा, नो लिसन। अब आगे क्या होगा, ये जो ये जो यूरिएज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये यूरिएज, उसके अलावा ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ है NH4OH, ये ठीक है, ये यूरिएज जो है ये भी एंटीजन के तौर पे काम करता है, एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन के तौर पे काम करेगा, यहाँ पे इम्यून सिस्टम ऑन हो जाएगा, इम्यून सिस्टम। ठीक है, लाइक एज यू पीपल हैव ऑलरेडी टोल्ड बाय मी इन क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे एंटीजन होती है वहाँ पे इम्यून सिस्टम आगे क्या करता है, वहाँ पे कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, साइटोकाइंस, साइटोकाइंस को रिलीज करता है, कीमोकाइंस को रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद इंटरल्यूकिन्स को रिलीज करता है, एंड दीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे हमने वो एथेरोसाइक्लोसिस के केस में देखा था। राइट, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय दिस यूरिएज एंजाइम। राइट, now what this ammonium hydroxide is going to do, it is going to damage, the epithelial cells, epithelial cells. You know, epithelial cells are responsible for the production of the bicarbonate ions and some mucus as well. So when these cells will be damaged, definitely there will be reduction in the bicarbonate ions and mucus production, definitely. So when mucus production will be reduced, when there will be the low bicarbonate ions, definitely the protective mechanism of the stomach will be disturbed. There will be imbalance between acyl production and protective mechanisms, right? ओके, इससे क्या होता है, हमारा स्टमक डैमेज होता है। थर्ड फैक्टर, देयर इज एन अदर फैक्टर, दैट इज लिपोपोलीसैकेराइड्स, दैट इज लिपोपोलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये जो लिपोपोलीसैकेराइड है, इट एक्ट्स एज एन एंडोटॉक्सिन, ऑफ द एच पाइलोरी, एक्ट्स एज एंडोटॉक्सिन। This endotoxin is again going to be acts as antigen, and same this kind of response. So definitely there will be the injury of the cell, there will be the perforation in the GIT wall, right? इम्यून सिस्टम की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ओके, राइट, अदर पॉइंट सुन लो। अब क्या हुआ, जो NH4OH बना था, NH4OH, ये क्या कर रहा है, पीएच को क्या कर रहा है, लो कर रहा है। ठीक है, जब पीएच लो होगी तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जो जी सेल्स होंगे, gastric G cells, वो कहेंगे what is happening, G cells, why the pH of the stomach is going to be raised, because ammonium hydroxide जो कि थोड़ा सा बैक्टीरिया के इर्द गिर्द होता है, वो पीएच को ऊपर लेके जाता है। जब पीएच को ऊपर लेके जाता है, रिमेंबर दैट होम्योस्टेसिस, बॉडी अपने इन्वायरमेंट को उसी तरह का रखना चाहती है, लेकिन इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है, वो तो बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व हो गया। बॉडी अपने आप को सेम रखने के लिए क्या करेगी, जी सेल ऑन हो जाएंगे, जी सेल क्या करेंगे, गैस्ट्रिन को रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिन को, और गैस्ट्रिन फिर क्या करेगा, एचसीएल की प्रोडक्शन फिर बढ़ा देगा। तो फिर एचसीएल के ऊपर से डैमेज है पहले, ऑलरेडी देयर इज अ डैमेज। ठीक है, अब जी सेल को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, जी सेल ने तो अपना एचसीएल की प्रोडक्शन को पूरा करना है।
और उस जो है ना को पूरा करने के लिए आईसीएल रिलीज करेगा। अब जी सेल को तो नहीं पता कि यहाँ पे एच पाइलोरी आया हुआ है, तो वो भी इसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो अपना काम करेगा, जिसकी वजह से फिर आईसीएल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो ज्यादा डैमेज करेगा। ठीक है, दिस इज एन अदर पॉइंट। सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो पीएच को लोअर कैसे कर रहा है, इंक्रीज नहीं करना चाहिए उसे? सर मैंने कहा इंक्रीज, मैंने लोअर तो नहीं कहा, आई सेड इंक्रीज। जब इंक्रीज होगी पीएच तो अब स्टमक ने तो अपनी पीएच को लो रखना है, तो उसको काउंटर करने के लिए फिर जी सेल ऑन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, कि एक चीज जो है ना वो ज्यादा होने लगती है, तो उसको फिर काम करने के लिए फिर चीज रिलीज हो जाती है। सही है, राइट, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो एच पाइलोरी है, एच पाइलोरी, एच पाइलोरी, एच पाइलोरी हैज एबिलिटी टू डैमेज एंट्रल एंट्रल डी cells. ठीक है, and you people know that D cells are associated with the release of SST. SST means somatostatin, and this somatostatin is associated with the reduction of gastrin. Because as you people know that the somatostatin decreases the gastrin release. तो जब H pylori की वजह से D cells भी डैमेज हो जाएंगे, तो गैस्ट्रिन के ऊपर जो सोमेटोस्टेटिन का इनहिबिटरी चेक था, दैट विल डेफिनेटली विल बी लॉस्ट। ठीक है, तो फिर क्या होगा, दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज वी नो इन द नॉर्मल फिजियोलॉजी डी सेल्स आर गोइंग टू इनहिबिट द गैस्ट्रिन रिलीज, दैट इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। नो हियर द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इज आल्सो गोइंग टू बी डिस्टर्ब। ठीक है, तो क्या होगा, तो गैस्ट्रन का जो चेक है वो भी खत्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से इससे क्या होगा, एचसीएल की जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये प्रमोट होगी, और एचसीएल प्रोडक्शन विल बी प्रमोटेड बिकॉज ऑल द इनहिबिटरी प्रोसेसेस goes down, right? So this is how the H pylori is going to disturb the protective mechanism of stomach, right? क्या होगा, एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो फिर डैमेज करता है किसको, जीआईटी सेल्स और म्यूकोसा को। तो रैप अप इट अगेन, अल्सर इज बेसिकली, peptic ulcer is a break or damage in the lining of the stomach or duodenum. It can damage the mucosa muscularis and submucosa. Symptoms क्या हो सकती हैं, पेन हो सकती है, ब्लीडिंग, obstruction और perforation. Perforation means hose formation. Factor of the peptic ulcer, right? What are those risk factors? The first risk factor is Helicobacter pylori or H pylori. It is gram-negative spiral shaped bacteria, most important cause of ulcer, right? This is H pylori. When it goes into the stomach, it start releasing an enzyme that is urease. This urease is going to convert urea into ammonia. Ammonia will be converted into ammonium ions. Ammonium ions will react with the hydroxide and make ammonium hydroxide. This is going to wrap by H pylori and prevents it from the acidic content of stomach, right? And make it survive there. किसको, H pylori को। अब ये जो यूरियज है, ये भी एंटीजन के तौर पे काम करता है वहाँ पे, इम्यून सिस्टम को ऑन करता है, इम्यून सिस्टम भी क्या करता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अल्सर के अंदर एक तो परफोरेशन है, फिर इन्फ्लेमेशन। आपको पता है वेयर देयर विल बी द बैक्टीरिया देयर विल बी इन्फ्लेमेशन, बिकॉज इट इज एन एंटीजन, एंड वेयर विल बी द एंटीजन देयर विल बी एन इन्फ्लेमेशन, बिकॉज इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। व्हेन इम्यून सिस्टम इज देयर, डेफिनेटली देयर इज प्रॉब्लम आउट देयर। This ammonium hydroxide is going to damage epithelial cells. Those are associated with the protective mechanism of the GIT. Lipopolysaccharide, endotoxins, acts as antigen, inflammatory response generate करते हैं। फिर उसके बाद जो है, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है, ये पीएच को ऊपर करता है, तो उसको अगेन लोअर करने के लिए जो है ना जी सेल जो है ना वो गैस्ट्रन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फिर एसिड की प्रोडक्शन होती है। एसिड की जितनी अब प्रोडक्शन दोबारा इरेगुलर होगी, तो उससे क्या होगा, डैमेज, अल्सर, परफोरेशन, obstruction, bleeding, pain, etc. H. pylori can again damage the D cells of the antrum, and these cells are associated with the production of the somatostatin. And when there is no somatostatin is there, there will be less inhibitory check on the gastrin. Gastrin level will be enhanced. Gastrin is again going to increase the production of the H cells. So in this way, H. pylori is responsible for the occurrence of ulcer. Is there any question? सर ये जो एच पाइलोरी है, ये सिर्फ स्टमक को अफेक्ट करेगा, ड्यूडेनम को नहीं करेगा? नहीं, duodenum को भी करेगा. It is associated both with duodenum and gastric both, right?